Assalamu alaikum students. This is Fiza Masood from Rana Liaquat Ali Khan Government College of Home Economics, and today we are going to learn the process of block printing, specifically hand block printing. And this lesson is prepared for the BS Home Economics students of semester 8 for the subject of textile designing too. So let's start. First of all, I will give you a review of the traditional textile printing techniques that are used in the industry. All of you know that there are basically three techniques. Number one is the direct printing. Direct printing includes the printing of color in which colorants containing dyes, thickeners and the mordants or the substances necessary for fixing the color on the cloth are printed in the desired pattern. So basically they are saying that direct printing includes the direct application of the dye or pigment or any type of color on the surface of textile material. It can be any process. All of you know that there are a lot of processes that are included in the direct printing. Either it would be block printing, it would be direct hand printing, it would be silk painting or some else. All these methods come under direct printing. Definitely they will include dyes, thickeners or the substances for binding them. There's a binders and glues, etc. Number two is the resist printing. Resist printing, as the name indicates, it will have some resistance between the dye and the fabric. It is a method in which a wax or the other substance is printed on the fabric which is subsequently dyed. So basically it has two parts. One is the method of applying a resistance and second is the dyeing of the fabric. The most common example that comes in your mind is batik printing, in which we have a resistance of wax on the fabric and then we dye the fabric. In this way, the places that have a form of resistance in wax, they do not allow the dye or the paint to penetrate on them, and when we remove the wax from the surface, it allows the design in the way the wax is applied. So the next is the discharge printing. In this, a bleaching agent is printed onto a previously dyed fabrics to remove some or all of the color. So basically we apply bleaching agent or some fast reactive agent on the surface that is already dyed. Remember, in discharge printing, the fabric is already dyed in 1 or 2 or 3 colors. It can be a series of steps of 2 or 3 colors. Like for example, we dye a color in yellow color and then we put some bleaching agent from some specific parts in form of a flower, and in this way the flower shape areas will be white and the rest of the material of the fabric would be yellow. And then if we again put it in another color dye, that is for example red color, so yellow and red would be a darker red and the areas that would be white that were white will be converted into a red color. Now we comes to the stages of printing processes. The printing process does involve several stages in one in order to prepare the fabric and printing paste and to fix the impression permanently on the fabric. So we have to understand this fact that whatever printing process we are going to use on our fabric, all of them should have gone from these fixed stages, like whether it would be screen printing or hand printing or block printing. The stages of printing would be the same. Now what are these stages? Number first would be the pre-treatment of fabric.
All of you know what is the pre-treatment means. Pre-treatment means that the treatment that is done before the printing or dyeing. So what it should be, it could be removal of any type of starches if it is applied on the fabric. And what is the reason for applying that? Because if we will not remove the starch or any other substance that is applied on the fabric, the dyeing, when the dyeing will happen, the pigment or the dye will not penetrate in the fabric, it will remain on the surface. So it's very important to have a pre-treatment of the fabric. It could be bleaching of a fabric as well. If a fabric is a gray fabric, or it can have some stains on it, so it should be pre-treated. Number 2 is the preparation of colors. So before starting any type of dyeing or any type of printing, you should arrange all type of colors that would be needed in a bulk amount. It should not happen that you make a small quantity of dye and then you start printing, and in the middle of the work you came to know that you are short of dye, and the next time when you are going to make another the same shade of the dye, you will not be able to make it the exact color. So always prepare your colors in bulk quantity that can be used in the one time of printing. Then preparation of the printing paste. Printing paste includes definitely the fixtures and the gums, or if they are water solubles, the amount of thickness that we want to have of the color with mixing of water and gum and binders and pigments. This is all the preparation of printing paste. When all these things are ready, then you are allowed to start your printing. Number 4 is the impression of paste on fabric using printing methods. Now first is always a test run. Always remember, you should not start your main project or your main thing at once. First have an impression of your paste on the fabric, because it does happen that after drying 1 to 2 degrees of dyes or the color pigment change, it may lighten or it may darken. So please always remember, you should have a proper impression of your paste or of your desired design on the fabric. So you should know what is going to come after when it is dried. Then after the impression of paste is done, and practically you will perform it, and after that the process would be the drying of the fabric. Any type of printing involves printing and then it's drying. The drying method can be different from printing to printing. For example, we use sunlight for drying, we can use hot iron for drying, we can use simple air for drying. Drying method can be different, but all type of printing needs to be dry. Next is the fixing, the printing with steam or hot air for pigments. Now fixation of your printing is very, very important. If you skip this process, that the fixation of printing with steam and hot air, you are not going to get your desired results. If the pigment is not fixed, remember your paint will disappear after 2 or 3 washes. And the last is the after process treatments. Definitely it's for the industrial use. We all know that there are some other processes, finishing processes, that are necessary for the fabric to come in the market. So if you are not doing it at home, the last process would be the finishing treatments. So now in these pictures there are 3 different methods of printing are shown. Number 1 is the digital printing that you can see. The second one is the hand block printing, and the third one is again a type of a digital printing. In all these designs,
I have tried to show you that whatever type of printing, these all include the same procedures. That is, these all fabrics would must have be pre-treated, then their colors and the pigments were prepared, and then after printing they all are dried in their specific ways according to the fabric and dyes, and then they are fixed, and then finishing processes are involved. Okay, now move on to the next, the methods of textile printing. So there are 4 main methods used to impress colored patterns on a cloth, mostly used industrially. Number 1 is the block printing. As you all know, what does it mean? The block printing includes the printing done with the help of wooden blocks or any other material blocks. Then is the roller printing, screen printing, and heat transfer printing. We will discuss the rest of the 3 printing methods in some other lectures. Let's move on to the next part. These printing styles used in the above mentioned methods are classified as direct printing, discharge printing, and resist printing. Now comes to the hand block printing. The definition of block printing. Hand block printing on textiles refers to the technique by which carved wooden blocks covered with dye are repeatedly pressed along a length of cloth to create patterns. Or we can say the block printing is a method of printing textiles by stamping ink dipped blocks, usually made from wood or linoleum, onto fabric. This technique is one of the simplest way to create custom fabric at home. All of you have an idea what does it is done. There are blocks, usually they are made from the wood, or there are some other natural synthetic materials as well, but the important thing is that they are carved. They have engraved surfaces on which the inks are applied through stamping or through pressing, and they are pressed by hands on the fabric, and then they create patterns. Now we comes to the materials required for hand block printing. Okay, now this is a list of materials. Number 1 is a few bowls or trays. Definitely the number of bowls or trays will depend on your colors or the shades you are going to use. Mostly 3 to 4 at one time, or 2 to 3 for color mixing. Number 2 is the sponges or the foam sheets. Like these are the thin sheets of 1/2 to 1 inch of thickness, and these are you can use any type of sponge for just we will put the paint on the sponge, that the paint is absorbed in the sponges, and then we will put our block on the surface of the sponge. In this way the less amount of paint would come on the surface of block. Otherwise, if we directly dip the block on the paint or the pigment, there is a chance that more ink is placed on the parts of the block, and it will drip out on the surface of fabric. Then we will need a muslin fabric for making a stamp pad. Basically, there is a tray, then we will have a sponge, a foam sheet, and onto that we will put a muslin thin layer, very thin layer of a fabric, and then a pigment is put on that. The foam will absorb all the pigment, and the muslin fabric will not allow any impurity or any thick material, or if there is a lump or is a bubble, to come on the surface of the block and to make it and to destroy it. Okay, we are just going to make like a stamp pad. Then a tray or plate for definitely making this
stamp pad, a table for printing. Now this is the most important thing, a table for printing. Mostly you have seen that in small industries or home industries where it is not done as a home project, industrially they have small tables. They are short heighted tables, but in either it would be a heighted table or a short table. The most important thing is that it should be soft enough to be pressed down, like the surface should not be so hard. अगर hard होगी तो जब आप अपना ब्लॉक प्रेस करेंगे तो वो प्रॉपरली जो है वो प्रेस नहीं होगा और वो जो हार्ड सरफेस से टकराएगा, जबकि अगर नीचे थोड़ी सी सॉफ्ट सरफेस होगी तो उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि वो आपके फैब्रिक के जिस पार्ट में अगर किसी कार्विंग में कोई थोड़ा बहुत फासला है, फ़र्क है, ऊंचा नीचा है, या आपके हाथ का इम्प्रेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं आ रहा, तो वो नीचे सॉफ्ट सरफेस होने की वजह से वो बहुत ही आसानी से कपड़े के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. Now next is the carpet underlay or foam. Now this is for under the printing table. If your table can move from one place to another, that is not desirable. So your table should be fixed. So carpet or foam, अगर आपके पास कोई इस तरह temporary arrangement है, so make sure that your table is fixed, and after while moving or working your table should not move from one place to another. Now felt material, all of you, what type of felt material it is? Basically the printing tables that are made for printing are covered with the sheets of felt material. Felt material आप सबने देखा हुआ है और वो बहुत ही कंजेस्टेड सा मटेरियल होता है फैब्रिक का, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, लेकिन उसकी खासियत ये है कि वो उसके अंदर स्टैम्प होने की, स्टैम्पिंग जब की जाती है तो वो ना ज़्यादा प्रेस होता है और ना ही ज़्यादा बिल्कुल फ्लैट रहता है. जिस जगह के ऊपर जितना स्ट्रोक लगाया जाता है, जितना इम्प्रेशन दिया जाता है, वो उस जगह को ही सिर्फ आसानी से प्रेस करता है. सो बेस्ट मटेरियल फॉर covering the printing table is a felt. Then definitely you will need a fabric that has to be printed. Then we will need wooden blocks जितने भी आपको चाहिए हो, and textile paints or natural dyes mixed with the thickeners. और आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं. मोस्टली वी विल यूज़ टेक्सटाइल पेंट्स और सिंथेटिक पेंट्स, बट द ट्रेडिशनली मेथड इज़ द नेचुरल डाइज. एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी all of the material that is required for hand block printing, and in the lower one picture there is a roller as well. In this with this it will help in the proper implementation of the pigment on the block. You can see the roller will pass on the only on the engraved parts of the wooden block. Okay, we were talking about the printing tables, so let's discuss this. Traditionally there are the height and the width 2 feet wide and 3 feet in length. आपने देखा होगा ज़मीन पे बैठ के छोटी हाइट पे काम किया जाता है और इनकी ज़मीन से ऊंचाई जो है वो 1 फीट ऊंची होती है. मोस्ट कॉमन जो लोकल इनका नेम है दैट इज़ पटियास. Nowadays, a bigger tables of 5 feet and 6 meters long and the 4 feet height are used for the faster production. In this picture, you can see a lady is working, and by the block printing, she is working on patiyas. अब जो है हमारे पास इंडस्ट्री में स्टैंडिंग पोजीशन के लिए भी जो आइडियल हाइट है जिसके ऊपर जो यूज़ की जाती है वो 4 फीट हाइट है, जिसके ऊपर ह्यूमन इम्प्रेशन जो है वो बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में प्रॉपरली आता है और वर्क सिंप्लीफिकेशन होती है. और ये 5 और 6 फीट वाइड क्यों है, 5 feet wide and 6 meters long, because it is the length and width of the fabric. और ये एक ह्यूमन बॉडी के लिए एक वक्त में चारों तरफ से यूज़ करना जो है वो ईजी रह सकता है. The printing tables are covered with 22 to 26 layers of the Hessian cloths and finally covered with the 3 to 4 layers of the old fabric known as acharas.
Okay, now what is Hessian cloths? Now this is example of the in the picture, that is somewhat like the jute, very thin layer of the jute type fabric, and you will get an impression that ultimately it is going to serve like a felt material. Now they are 22 to 26 layers, like 3 to 4 inches की thickness इसके अंदर जो है वो मौजूद होगी अगर इसकी 22 से 26 लेयर्स होती हैं. एंड देन इसके ऊपर एक फाइन लेयर जो है वो अचारास की डाली जाती है. पुराना फैब्रिक हो सकता है कोई, या प्लेन फैब्रिक हो सकता है, ताकि वो नीचे से इसकी फजीनेस जो है वो ऊपर ना आए. लेकिन नाउ दिस फ्रेश ये जो अचारास जो है वो हर दफ़ा की प्रिंटिंग में चेंज होते हैं, बिकॉज ये पुराना कपड़ा होता है, इनकी कोई इतनी ख़राब होने के चांसेस नहीं होते. लेकिन जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो कुछ पेंट जो है वो नीचे के टेबल के पार्ट पे जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से दोबारा उसके ऊपर कोई साफ फैब्रिक रखा नहीं जा सकता. लिहाजा वन टाइम प्रिंटिंग के लिए टॉप जो कवर है वो दोबारा चेंज किया जाता है. Okay, now we will discuss which is the best fabric for the hand block printing. Cotton. Cotton is the most commonly used and the best fabric that can be used for the hand block printing, because it has excellent absorbency of the colors and the dyes are very good. With it, they fix it permanently after some natural steaming process, and no special care is required. But block printing can also be done in other fabrics, definitely silk, linen, khadi fabrics, but mostly as a common industry the cotton is used, and then the finishing processes are done to make it a luxurious look. Now discuss about some dyes. Some of the common cotton dyes include indigo sol, pigment dyes and rapid dyes. Hope you all know about it. Pigment dyes are the most common dyes because they are water soluble dyes and they have pigments for only coloration, but they have solutions like gums and binders that penetrate in the surface of the fabric, whereas rapid dyes, they react so fast and they react chemically with the surface of fabric, so they are not advisable for home use. And pigment dyes can be saved for a longer period of time. Indigo dyes, and again indigo sol dyes, are also reactive dyes, and the oxidation process happens. So in the old days, vegetable dyes are the mainly used for the block printing. You all know the most common vegetable dyes. We have saffron, onion, madder leaves, and indigo and all that. But nowadays, these days, different dyes are used for printing. But the most important thing is the mixing of the color. You should be very expert in the color mixing, because you can mix 5, 6 or hundreds of pigments together to form a new color of your desired choice. So you should be skilled in, or you should be expert in color mixing. You should create a permanent you should create a good color, exactly color that you want by mixing 3 to 4 colors rather than buying a ready-made color for that particular shade. So pigment dyes are very popular and they can be kept for a longer time. The most common colors that we see in the block printing are red, indigo, black, brown, mustard and orange. Nowadays we have a lot of other colors as well, but mostly you have seen these color in ajraks as well. Ajrak is also a branch of block printing, but the process is quite difficult. Process is quite different. A little different, we will discuss it sometime later, but these are the main colors that are used in the block printing. Now we comes to the main process, the block making. Okay, whatever design you want to make, the design is first drawn on the paper and stretched out on a smooth wooden surface. Whatever type of design it is, it should be first drawn on a paper,
and it would be placed on a smooth surface of the wood. Now in the picture you can see a piece of wood on which the design is traced out and the carving is started. A motif or design is then pierced with the needle or so that the impression of is transferred on the wooden surface. Okay, these are the two methods. Either you can directly trace with the help of tracing paper or with the help of needle. So very finely you will just pierce with the needle, so सिर्फ impression जो है वो wooden surface पे आता है, not even ink का part किसी भी तरह से transfer होता है tracing के लिए. So later the unwanted areas are carved out. इसके अंदर क्या होगा, engraved part वो रहेगा जो आपके जिसमें आपको impression जो design आपके block में चाहिए. Unwanted areas are carved out और ये तकरीबन 1/4 इंच तक deep जो है उसको carving करके हटा दिया जाता है. So iron nails and wooden felt are also used to improve the quality of impression. Different type of things and materials are used for better and fine carving of the wood. The ideal and the best wood is shisham wood. Definitely it's expensive one, so teak wood is also used for making blocks. Mostly the size of one block is between 5 to 12 inches. Now mostly 4 to 5 inches, 6, 7, 8 inches are very common. Maximum would be 12 inches, but that would be for commercially use, but maximum 8 to 10 inches तक जाता है. The height of the block is 1 inch and it always has a small handle on the top. We will discuss later what is the purpose of that handle, but why the size is 5 to 12, because you are going to do it with your hands, and when you are stamping with your hands, definitely your hand will give a specific pressure on the block. So 5 to 12 or 10 or 8 to 10 inches, it's the size where you can give a very even pressure all over the block. Okay, one more thing I want to tell you, that after carving the wooden blocks are dipped or immersed in oil for about a week, so that the oil will steep in them and then they are prepared to go in the market. Now wooden blocks can be classified into 3 types. Number 1 is the rake, and this is the outline block. Gud mean gundhe वे से निकला है. The background block, it will create the background or the base color. And number 3rd is the datta, is the filling block. I will show you through this picture. These are the 5 blocks that are going to complete one design. Keep it in your mind, there might be many blocks that are used as a single block. ठीक है, you have seen a lot of blocks. एक ही दफा उसको प्रिंट किया और आपके सामने इम्प्रेशन आ गया, आपका कंप्लीट डिजाइन तैयार है. बट कम्प्लेक्स ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है, जितने कलर्स हमें यूज करने होते हैं एक डिजाइन में, उतने ही ज्यादा ब्लॉक्स हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं, सेम विड्थ सेम साइज के. नाउ यू कैन सी इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. नंबर 1 इज द रेक, दैट इज द आउटलाइन. ये मोस्टली ब्लैक कलर की होती है. तमाम ब्लॉक प्रिंट्स, अजरक, इन सब के डिजाइन आपके माइंड में आ सकते हैं. इसको प्रिंट करने से बहुत ही सिर्फ तमाम आउटलाइन आ रही है. नाउ सेकेंड वन इज द Now these 3 are the datta, that is filling. अब फिलिंग में चूंकि 3 कलर्स हैं, पिंक, रेड भी आ रहा है, पिंक का भी शेड आ रहा है और एक ग्रीन, डार्क ग्रीन का भी आ रहा है. तो इसके अंदर एक आउटलाइन ऑफ जो है उसकी फ्लावर की आ रही है. सेकेंड वाले के, थर्ड वन के अंदर फिलिंग ऑफ फ्लावर है. फोर्थ वन के अंदर आप देख सकते हैं उसके स्मॉल एरोज में कलर आ गया है. और जो लास्ट है उसके अंदर बिल्कुल जो इस फ्लोरल मोटिव के बीच की बैकग्राउंड है लाइट सी, वो वाला पार्ट है. तो इन चारों डिजाइन्स के अब कहने का मकसद ये है कि जितने पार्ट्स होंगे, एक में से वो पार्ट
इंग्रेव किया जाएगा जो सिर्फ आउटलाइन का होगा, बाकी पूरा डिजाइन कट आउट होगा। सेकंड में जो कलर आपको प्रिंट करना है वो सिर्फ उभरा हुआ होगा, बाकी तमाम का तमाम उसमें से कट आउट कर दिया जाएगा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है इसके अंदर आउटलाइन बनी हुई है और उसके ऊपर दोबारा प्रिंट जो हो रहा है वो ग्रीन कलर की फिलिंग। डेफिनेटली इसके ऊपर एक और प्रिंट भी आएगा जो कि इसकी आउटलाइन के बाद इसके अंदर माइट भी पिंक ऑरेंज कोई भी कलर हो, वो इसके फ्लावर को पिंक करेगा। देखिए ये जो आपको ब्लॉक नजर आ रहा है इसके ऊपर एक हैंडल भी है और इस हैंडल का मकसद क्या है कि आप अपने ब्लॉक को प्रॉपरली रखें। इस ब्लॉक के ऊपर आपकी मेजरमेंट्स होती हैं, आपको बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिला के परफेक्टली इसको उसी जगह पे प्लेस करना होता है। यहीं पे सारी क्राफ्टमैनशिप जो है वो इन्वॉल्व होती है कि डिजाइन हिलना नहीं चाहिए, इधर आप एक ही जगह पे 6 दफा स्टैंप लगा रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द राइट साइड। यहाँ पे 2 ब्लॉक्स का सेट दिया गया है और नीचे उसका इम्प्रेशन भी दिया गया है। एक के अंदर आउटलाइन है, ये चूंकि सिर्फ 2 कलर्स पे बना हुआ है और इसके अंदर जो व्हाइट कलर है वो इन दोनों डिजाइन्स के अंदर जो डिफरेंस है वो ऑटोमेटिकली उससे क्रिएट हो रहा है। ओके, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में उसका फिलिंग यानी ब्लू वाला पार्ट उसके अंदर दिया गया और राइट वाला जो पार्ट है जिसके अंदर ये रेड का इंप्रेशन जो है वो इसके अंदर शामिल है। सो दिस थिंग क्रिएट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स टू क्रिएट वन कंप्लीट डिजाइन। Now comes to the process of hand block printing. The process is simple. I think अब तक तो सबको समझ आ चुका होगा. The fabric to be printed is washed free of starch and softly bleached. ब्लीचिंग का मकसद सिर्फ यही होता है कि अगर उसके ऊपर कोई स्टेन्स हैं या किसी भी तरह का कोई फाइबर के अंदर कोई लाइट डार्क के शेड्स हैं तो वो एक जैसा कलर का हो जाए और फिर प्रिंट जो है वो इवन होगा. If dyeing is required, it is done before printing. In some printing techniques, dyeing is done after printing as well. So it depends on the method what is going to apply. लेकिन usually इसकी अगर आपने बेस कलर कोई सेम देना है और ऊपर कोई एक और कलर देना चाह रहे हैं तो बिफोर प्रिंटिंग आपको डाइंग करनी होगी. Now then again after printing dyeing, the fabric is again washed to remove excessive dye and dried thoroughly. The next is fabric is stretched over the printing table and fastened with small pins. This is an important stage as there should be a uniform tension in the fabric with no ripples. Now stretching on the printing table or any other thing is very important. It's not like that you will move your stretching pins or table after some time. It's one time you have to stretch properly all your the material that can be placed on the table. There should be no ripples, there should be no folds, and the grain of the fabric, all of you know, very important, grain should be very evenly placed. The color to be used is kept in a tray on a wheeled wooden trolley with racks which the printer drags along as he works. On the lower shelves, printing blocks are kept ready. Now this is very important to keep all your required material along with you because this is a quick process. The paint layer the printing layer is very thin, and with air in few minutes or few seconds it's started to dry. So all of the things you need at one time that you might need after like 2 or 3 colors, all of them should be ready and they kept in your first hand reach. It's better to have a trolley, wheel trolley, and in different sections you have all the material. So under the color tray there is another tray usually in the industries that contain a thick viscose liquid made from the color binder and glue, and usually this mixture is mixed with the pigment and then a final solution is ready for printing. So
this is very important, color binder and glue for the fixation process. The printing starts from left to right. Okay, now printing always is done from left to right. What could be the possible reason? देखें, टेबल के ऊपर फैब्रिक स्ट्रेच्ड है. अगर आपने सेंटर से स्टार्ट की फ्रॉम लाइट और फिर आप लेफ्ट पे जा रहे हैं या किसी भी इस तरह से, तो पहली बात उसका स्केल आउट हो जाएगा. सेकेंडली, जब आप रिपीटेडली उस जगह के ऊपर आपका हाथ या आपका जो है आर्म जो है उसके ऊपर प्रेस होगी तो आपका प्रिंट खराब होगा. वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट का एरिया आप मूव करके आगे जाते जाएंगे और उस जगह के ऊपर कोई भी इंप्रेशन या किसी भी तरह का प्रेशर जो है वो नहीं आएगा. सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर एंड बेस्ट इज द लेफ्ट टू राइट. The color is evened out in the tray with a wedge of wood and the block dipped on the outline color, usually black or dark color. The first block is the outline color, and evenly that in the tray you put out the paint. You mix out with the binder and glue, and as I told you, like what we will do in our class is we will make a stamp pad of the foam and a small muslin fabric, and then we dip we put our block on the surface of that stamp pad. So when the block is applied to the fabric, it is slammed hard with the fist of the back on the handle so that a good impression be registered. So how much you are very careful about printing. Always remember you have to slam on the back of the block. जैसे ही आपने ब्लॉक को उसके ऊपर अप्लाई किया है. दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है कि आपने डायरेक्ट स्ट्रेट ऊपर से 90 के एंगल पे नहीं रखना. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन कॉर्नर एंड स्लाइटली पुट ऑन द सरफेस ऑफ फैब्रिक, एंड व्हेन वंस यू पुट इट, डोंट मूव इट. यू जस्ट होल्ड द हैंडल प्रॉपरली एंड स्लैम 2 or 3 टाइम्स फ्रॉम विद द फिस्ट. अपनी हाथ की मुट्ठी बना के उसके ऊपर जोर से उसको जो है 2 दफा आपने मारना है. उसका रीजन ये है कि उसकी वजह से इक्वल जो है इम्प्रेशन जो है वो हर तरफ जाएगा. होगा कोई पार्ट उसका प्रॉपरली आपसे प्रेस होने से रह गया है तो वो भी प्रॉपरली उसके ऊपर प्रेस हो जाएगा. दिस जॉब इज यूजुअली डन बाय एन एक्सपर्ट प्रिंटर हु इंश्योर्स द इफेक्ट इज कंटिन्यूअस एंड नॉट डिसजॉइंट. डेफिनेटली कोई पार्ट अगर आपने सही से प्रेस नहीं किया, जितना भी केयरफुली, ह्यूमन एरर्स आर पॉसिबल, लेकिन यही आपकी स्किल इसमें काउंट होती है. तो अगर कोई पार्ट इसमें रह भी गया है आपके प्रेसिंग में, तो 2-3 दफा जब आप स्लैमिंग करते हैं तो फिर वो इवनली वहां पे प्रेस हो जाता है. सो इफ नाउ मल्टीपल कलर्स आर रिक्वायर्ड, नो सेकंड प्रिंटर क्या होगा कि वो सेकंड कलर में ब्लॉक डिप होगा और वो अगेन उसी जगह से उसी पॉइंट के आउटलाइन के साथ ऊपर रखा जाएगा. और इसी तरह लाइक 3 or 4 कलर्स कैन बी अप्लाइड. इसी तरह सेम प्रोसीजर उसके ऊपर फॉलो किया जाएगा. आफ्टर प्रिंटिंग द फैब्रिक इज सन ड्राइड. यूजुअली पिगमेंट डाइज आर बेस्ट अंडर सन. They are sun dried, which is a part of the fixing process, but not proper fixing, not 100% fixing is done. All of you have done simple painting at home at some time. So आप लोगों ने आयरन का इस्तेमाल किया होगा, हॉट आयरन, सन ड्राइंग. ये टेम्पररी या उसका एक कुछ परसेंटेज है जो फिक्सेशन को अलाउ करती है, लेकिन उसके बाद क्या किया जाता है, इसको कमर्शियली इट्स बेस्ट, या अगर आप घर में भी कर रहे हैं, स्टीम देना, उसको हॉट स्टीम जो है हल्की सी थोड़ी देर के लिए, स्पेसिफिक फ्यू सेकंड्स के लिए प्रोवाइड करना. दिस इज द फिक्सेशन प्रोसेस. इट इज रोल्ड इन द वैड्स ऑफ न्यूज़पेपर टू प्रिवेंट द, डेफिनेटली बहुत बड़ी क्वांटिटी में अमाउंट में बन रहा होता है ब्लॉक प्रिंट इंडस्ट्रियल लेवल में, तो उसको अलग करके रख दिया जाता है ताकि कोई दूसरे कलर्स या डाइज जो है ना आए. लेकिन वो इसलिए होता है कि उसके बाद उसको स्टीम देना होता है, स्टीमर के अंदर से गुजारा जाता है. यूजुअली ये मशीन्स ऐसी होती हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, उसके अंदर से फैब्रिक जस्ट पास आउट हो रहा होता है और वो तकरीबन जितने सेकंड्स के लिए 18 से 20 सेकंड्स जितना उसमें से रहता है उस मशीन के अंदर, उसके ऊपर हॉट एयर, स्टीम्ड एयर जो है वो डाली जाती है.
After steaming, the material is washed thoroughly in large quantity of water and dried in the sun again, after which it is finished by ironing out single layers which fix the color permanently. स्टीमिंग के बाद भी अगर कोई कलर आपका एक्सेसिव कलर आपने डाल दिया है, आपके ब्लॉक से आपकी फैब्रिक पे आ गया है, या अमाउंट से ज़्यादा किसी जगह पे थिक लेयर लग गई है, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ही फिक्स होगी। तो अगर कोई एक्सेसिव मटेरियल है तो वो उस वॉशिंग में निकल जाएगा। दोबारा ड्राई होने के बाद जिस तरह हम अपनी आयरन से घर में बैक साइड से आयरन से प्रेस करते हैं, इसी तरह इसको भी सिंगल लेयर आयरन फिनिशिंग होती है जो कि इस कलर को परमानेंटली फिक्स करती है और सेवरल वॉश के बाद भी इसको फेड नहीं होने देती। So this was the process. Here I am showing you another example of the picture. In the left one you can see a commercial process is going on a fabric. फैब्रिक के साथ ही आपको एक रेड कलर का मटेरियल बना हुआ इसकी स्टैम्प पैड की तरह ट्रॉली में नजर आ रही है, जिसके अंदर तमाम रिक्वायर्ड मटेरियल है। दूसरी तरफ ग्रीन कलर का मटेरियल भी नजर आ रहा है। दोनों रिक्वायर्ड चीजें जो उनको चाहिए इस डिजाइन के लिए वो उस स्किल्ड वर्कर के पास मौजूद है, उसको बार बार भाग के दूसरी तीसरी जगह पे नहीं जाना पड़ रहा। अगर राइट साइड पे आए तो आप देखें नीचे एक ब्लैक कलर की आउटलाइन आपको नजर आ रही है जो कि पहले से बनी हुई है। सेकंड एक ब्लॉक जो है वो ग्रीन कलर के लीव्स का पार्ट है फिलिंग, और जो लास्ट पिक्चर में आपको नजर आ रहा है वो उसके रेड कलर फ्लावर की फिक्सेशन का है। सो दिस इज द होल प्रोसेस इज डन। नाउ सम मोर एग्जांपल्स। लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो आपको इन तमाम ब्लॉक्स में हैंडल्स भी नजर आ रहे हैं। ये भी नजर आ रहा है कि उनकी हाइट और विड्थ जो है वो एक हाथ ह्यूमन हैंड के हैंडल करने के लिए आसान है। अगर कोई 2-3 फुट का हम बड़ा ब्लॉक बना लेंगे तो उसका क्या फायदा नुकसान होगा? उसका ये नुकसान होगा कि हम उसको प्रॉपरली हर जगह से फोर्स अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ये आपके फिस्ट के अंदर ही प्रॉपरली, छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक की हाइट जो है वो 1 इंच है, विड्थ और लेंथ में वेरी कर रही है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जो बार बार एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है लेकिन उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही है, वो इतना स्किल्ड तरीके से कॉर्नर मिला के किया जा रहा है कि वो पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे डिजाइन कोई ओवरलैप हो रहा है या कहाँ से कोई फासला छुट रहा है। completely design. Or the last one again, this is the example of block prints. I hope you have enjoyed it and you understand it. Thank you for listening.